Assalamu alaikum and welcome to my lectures. I am your social studies lecturer Midhat Abbas. कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म किया था जब हम पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्कस कर रहे थे. आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस डिस्प्यूट को फर्दर डिस्कस करते हैं. हमने बात कहाँ ख़त्म की थी? क्या आप लोगों को याद है? राइट. हमने बात ख़त्म की थी जब 1948 में लैंड ऑफ इज़राइल डिक्लेयर कर दिया गया पैलेस्टीन को. दैट इज़ वेयर वी लेफ्ट. नाउ ओवर द ईयर्स, सिंस आपने देखा होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो बढ़ता जाता है. चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं, हैंडल हो जाती हैं, बट वो जो रीज़न है उसके पीछे वो ख़त्म नहीं होता. सिमिलरली पैलेस्टीन का ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ. Years passed. 1956 में Suez, that was a war that happened. 1967, there was a 6-day war. Then in 1973, because the Egyptians and the Syrians, they lost in a 6-day war, they again attacked Israel, hoping that they would win the land back. Egyptians ने और Syrians ने 1973 में इसराइल पे दोबारा अटैक किया, ये सोच के कि अब जो पैलेस्टीन है, जो ये ज़मीन है, ये उनकी हो जाएगी या वो जीत सकेंगे. बट अगेन, nevertheless, it was taken back from them. Then in 1993, years passed, people over there faced a lot of issues and problems. But 1993 में एक अच्छी बात हुई. वो बात क्या थी कि इजराइलीज ने रिकग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन लीड कर रहा था? यासिर अराफात. इस बेसिस पे कुछ लैंड, सम ऑफ द लैंड ऑफ द पैलेस्टीन वाज रिटर्न्ड टू अरब्स. पैलेस्टीनियन को कुछ ज़मीन वापस कर दी गई इनकी कोशिशों की वजह से, क्योंकि यासिर अराफात वाज रिप्रेजेंटिंग पैलेस्टीनियंस. देन अब दे हैव बीन सो मेनी ईयर्स, आप पिछले लेक्चर में भी देखते आ रहे हैं कितने अरसे से इस एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर कितनी ज़्यादा अटैक्स, वॉर्स, सब कुछ हो रहा है. एंड एट द एंड अफेक्ट कौन हो रहा है? द पीपल लिविंग ओवर देयर. ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू लिव इन पीस. कॉन्फ्लिक्ट हर कोई ख़त्म करना चाहता है, सुकून से रहना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ज्यूइश टेरिटरीज या ज्यूइश सेटलमेंट्स दे वर इंक्रीजिंग. ज्यूज आहिस्ता आहिस्ता, जो कि शुरू में इफ़ यू रिमेंबर तो पिछले लेसन में हमने बात की थी कि 7 to 8% पॉपुलेशन थी जब 47 में डिसाइड किया गया था डिक्लेरेशन में कि इसको मेजॉरिटी एरियाज में, मतलब अरब और ज्यूइश एरियाज में डिवाइड कर दिया जाएगा. लेकिन अब ओवर द ईयर्स ये हुआ, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल डाउन नहीं हुआ, ज्यूज आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती गई. अब अगर वो खाली फैलते या वो अपने आप को खाली एक्सपैंड करते वो बात समझ आती थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया कि दोज प्लेसेस और होम्स और buildings which were occupied by Palestinians, they used to break them down. उनको गिरा देते थे और उनकी जगह अपनी सेटलमेंट बना लेते थे. पैलेस्टीनियंस के ऊपर प्रेशर और फोर्स बढ़ती जा रही थी, उनके लिए जगह भी तंग होती जा रही थी, उनके लिए रहना भी मुश्किल होता जा रहा था. तो ऑब्वियसली जब इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी तो देयर विल बी अ रिजल्ट, एंड द रिजल्ट वाज एन अपराइजिंग, इंतफादा. अब इंतफादा क्या है? Intifada was that Palestinian youth resorted to stoning against Israeli tanks and armors. अब वो ये होता था कि जब भी कोई इजरायली टैंक या आर्मर बाय फोर्स पैलेस्टीनियंस के घर या शॉप्स गिराने जाते थे तो द पैलेस्टीनियंस यूज्ड टू स्टोन देम बैक. अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर स्टोनिंग होगी, लेकिन उसका इफेक्ट नज़र आया, बिल्कुल नज़र आया. लेकिन पैलेस्तीन की हालत जो है वो ज़्यादा संभली नहीं. 2004 में यासिर अराफात passed away, he died. So Mohammed Abbas took his position for the Palestine Liberation Organization. Under him, 2007 में a civil war broke out between the Gaza Strip and the main port of the Palestine. In actuality, असल में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जब इसराइलीज ने रिकग्नाइज किया था तो जो लैंड इनको वापस की गई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी गाजा स्ट्रिप. जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, आपको पैलेस्टीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता लगेगी और गाजा स्ट्रिप की भी लोकेशन पता लगेगी.
Now, अब Gaza Strip में ये हुआ कि when the civil war broke out, as a result, it was uprising, civil war थी, the Israelis all again won. Gaza was left under the control of Hamas. अब Hamas एक नई थर्ड पार्टी थी. वो लोग कौन थे? वो लोग थे जो entirely चाहते थे कि इजराइल ही खत्म हो जाए. They didn't want the existence. पीछे रीजन क्या होगा? पावर. Obviously जब लैंड हाथ में आएगी, सी के करीब है, ट्रेड इफेक्ट होगी, इकोनॉमी इफेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली अगेन द होल कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट गेटिंग पावर ओवर द पीस ऑफ लैंड, कि किसी तरह ये ज़मीन कब्जे में आ जाए और फिर उसकी वजह से हम अपनी मईशत को बेहतर बना सकें. Then in 2009, Netanyahu, he was the prime minister. He wanted to hold talks with Mahmoud Abbas. He denied that there will be no talks until and unless Jews की ये जो settlement बढ़ती जा रही है और जो वो Palestinians को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए. ये talks couldn't proceed because obviously Jews settlements did not stop. Jews ने अपना जो behavior है वो बिल्कुल नहीं बदला, तो obviously वो conflict फिर वहीं का वहीं रहा. At the end, there was a stalemate. एक deadlock आ गया. उस deadlock में Israel controls most of the Palestine, including Jerusalem and other holy places. So by force, Palestine की majority places are still controlled by Israelis. अब, if you talk about today, what is the condition? I want you all to have a look at this video. ये video अभी जो चलेगी वो आपको Palestine की current situation के बारे में थोड़ी सी information देगी. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I am pleased to be here on behalf of the Secretary General here today. Allow me to begin by welcoming you to the opening of the United Nations Forum on the question of Palestine in support of a peaceful and just solution to the Israel-Palestine conflict. The Palestinian question has been on the agenda of our organization almost since its inception, over 70 years ago. Some of the first decisions and engagements of the United Nations had been aimed at resolving that conflict, and the UN remains deeply involved. The Israeli-Palestinian conflict also goes to the heart of the Charter of the UN and its fundamental principles based on the painful experiences of two world wars, that conflicts be solved without recourse to violence, that the dignity and worth of the human person be respected, and that the acquisition and annexation of territory of another state by force are inadmissible. Over the near century that has passed since the Israeli-Palestinian conflict began, the international community and the United Nations have been unable to put an end to the occupation and realize a just and lasting peace. As a result, Palestinians have endured prolonged occupation and the denial of their legitimate right to self-determination and statehood. The peace process has stalled. Voices of hate and confrontation are deepening mistrust and posing a constant challenge to reaching a sustainable peace. Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, unfortunately, the situation is not moving in the direction of sustainable peace. As we have witnessed over the last weeks, security incidents and provocations continue to dangerously escalate the already precarious situation in the Gaza, in the West Bank, including East Jerusalem, and at times inside Israel. The indiscriminate launching of rockets from Gaza into Israel and the subsequent Israeli military strikes on Gaza threaten to derail the precarious calm. A new conflict would be devastating for the Palestinian people. It would have consequences for Israelis who live in the vicinity of the Gaza perimeter and would be likely to have regional repercussions. The Secretary General and his special coordinator have called on all sides to exercise maximum restraint as the situation remains extremely tense. The humanitarian crisis in Gaza remains defined by prolonged suffering and deep despair.
The coastal enclave remains under severe closures and restrictions on the freedom of movement of people and goods, while the military build-up by Hamas and other militant groups continues. Gaza is an integral part of the Palestinian state, and Palestinian unity is needed for a politically stable, economically viable, sovereign and independent state of Palestine. I welcome the tireless efforts of Egypt to continue dialogue with Palestinian factions with the aim of maintaining stability in Gaza and achieving genuine reconciliation. I urge all parties to remain engaged in this critical effort. I urge Israel to lift restrictions on the movement of people and goods with due consideration of its legitimate security concerns. Unless these restrictions ease, the Palestinian economy can never be self-sustaining or generate enough tax revenues for the Palestinian Authority to sustain its operation without donor support. Now, Palestine ka conflict is still a conflict because no one has actually put in an effort कि उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए. पिछले लेक्चर में याद है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं. However, unfortunately अब तक नहीं हो सका. Now, let's talk about the second conflict, Middle East conflicts. Before moving on to the conflict, we need to understand, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गल्फ रीजन क्या है. गल्फ रीजन में आते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूएई और कतर. सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं. ये रीजन जो है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको शो कर रहा है कि गल्फ रीजन कौन सा है और उसके अंदर कितने कंट्रीज आते हैं. ये रीजन एक पुअर और बैरन रीजन था. यहाँ पे ना ज़मीन ज़रखेज़ थी, ना कुछ पाया जाता था, तो इसकी इतनी वक़्त नहीं थी, कोई इस रीजन में इंटरेस्टेड नहीं था. Then however, 20th century, after the Second World War, it became the richest region in the world. ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन रीजन बन गया. कैसे? Oil. Oil wells were found in that region. And they were in so much abundance, और वो इतनी मिकदार में थे कि आज भी almost half of the world supply of oil comes from the Gulf region. अगर आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे जहां हमने ऑयल रिसोर्सेज की बात की थी, तो आपको ये बात वहां पे भी नजर आएगी कि 45% ऑफ एनर्जी सप्लाई जो है वो ऑयल से आती है. और वो ऑयल कहां से आता है? गल्फ रीजन से. अब जब ये गल्फ रीजन इतना रिच हो गया, एडवांटेजियस भी था, फायदेमंद भी था उस रीजन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल है, व्हेन दे विल सेल द ऑयल, दूसरे मुल्कों को बेचेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, पैसा मिलेगा. वहाँ एक डर भी बढ़ता गया, क्योंकि पहले उस ज़मीन के ज़र्रे में कोई फ़ायदा नहीं किसी को नज़र आता था, तो कोई उस पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता था. अब जब इतना सारा ऑयल वहाँ जब मिल गया, तो बहुत सारे कंट्रीज़ वर अट्रैक्टेड. उनकी जो नज़र है वो उस कंट्री में, या उनका जो इंटरेस्ट है वो उस रीजन में बढ़ गया. सबसे पहली चीज़ जो हुई वो क्या हुई? ईरान इराक वॉर. अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ईरान और इराक की बाउंड्रीज कैसी हैं. वो दोनों कंट्रीज जो हैं वो शतल अरब रिवर इसके बॉर्डर पे हैं. नाउ व्हाट हैपेंड? ये डिस्प्यूट या ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ दीज टू कंट्रीज. जाहिर सी बात है, जब आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी पावर बढ़ा लो, या आपकी इकोनॉमी बेटर हो जाए, या आपको फ़ायदा ज़्यादा होने लग जाए, तो आप कोशिश करोगे कि वो ज़मीन का हिस्सा भी आपके अंडर आ जाए. ये मौका इराक को मिला 1980 में. वो इसलिए मिला क्योंकि शाह वॉज ओवरथ्रोन. वहाँ की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई. जब वो ख़त्म हुई तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया इराक ने. उसने फ़ौरन ईरान को इन्वेड कर दिया, उस पर हमला कर दिया. इट वॉज अ 8 long years वॉर. 8 साल चली वो वॉर. और उसमें आमने सामने कौन था? सदाम हुसैन और आयतुल्लाह खुमीनी. सदाम हुसैन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आयतुल्लाह खुमीनी की फोर्सेस
جارحانہ طریقے سے ان کے ساتھ لڑیں گے. سو ایران ڈڈ ناٹ گیو اپ. ایران نے ہمت نہیں ہاری. لیکن وار ہے, کانفلکٹ سے سٹارٹ ہوئی, وار میں کنورٹ ہوئی. کیا ہوا رزلٹ؟ ٹیربل کلنگ آن بوتھ سائڈس. دونوں سائڈس پہ, عراق اور ایران دونوں جگہ بہت سارے لوگ مارے گئے, لیکن زیادہ نقصان ایران میں ہوا. ایران واز افیکٹڈ فردر بیڈلی. اب عراق کو سپورٹ کس کی حاصل تھی؟ سارے ویسٹرن ریجیمز جو تھے وہ عراق کو سپورٹ کر رہے تھے. اینڈ دا وار کنٹینیوڈ, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. انٹل اینڈ انلیس یونائٹڈ نیشن انٹروینڈ. یونائٹڈ نیشنز آپ سب جانتے ہی ہوں گے, ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے سارے ملکوں کی. اس نے پھر اس میں دخل اندازی کی اور ان دونوں کنٹریز میں سیز فائر امپوز کیا. سیز فائر کہتے ہیں کہ وار کو ختم کر دینا. اور ان دونوں ملکوں نے ان 8 سالوں کے بعد جہاں اتنا نقصان اٹھا لیا تھا, الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن کے کہنے پہ وہ وار ختم کر دی. اسٹوڈنٹس, اب ہم نیکسٹ لیسن میں ڈسکس کریں گے کشمیر ڈسپیوٹ اینڈ another dispute. So what? You have to come back and we will be discussing those 2 disputes in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.